गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। तो अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस के जो नॉर्म्स हैं उनको ईज़ कर दिया गया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। तो अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो एक्चुअली जैसे जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी उनकी अब जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगी उसकी वैलिडिटी अब 13 साल होगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की जो है वैलिडिटी 15 ईयर्स की होगी। और जो है जैसे जो बाकी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अदर देन माइनिंग और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो है वो वैलिडिटी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वो 10 साल की होगी। तो एक्चुअली होता क्या था कि माइनिंग की लीज़ तो गवर्नमेंट जो है वो दे रही है 50 साल के लिए किसी कंपनी को, लेकिन जो उसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस है वो सिर्फ 30 साल के लिए वैलिड है। तो ये आपस में अलाइनमेंट नहीं है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि इसको आपस में अलाइन करना पड़ेगा। या तो 50 साल की माइनिंग लीज़ दो, आई एम सॉरी 30 साल की माइनिंग लीज़ दो, या फिर जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी जो है वो भी 50 साल की करो, क्योंकि ये दोनों अलाइन होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो है आर्गूमेंट ये दिया है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनका हाई जेस्टेशन पीरियड होता है। उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको जैसे ही क्लियरेंस मिली आप उसी टाइम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगे। आपको बहुत से और फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, फिर उसकी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो, उसको ऑपरेट करना तब शुरू करते हो, नहीं तो वो फाइनेंशियली अनवाइबल होते हैं। लेकिन हमारी जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है उसके अंदर ये एक कंडीशन होती है कि अगर आपको जैसे ही ईसी मिला है उसी के साथ आपको प्रोसेस जो है वो शुरू कर देना होगा कंस्ट्रक्शन का। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करते तो जब आप दोबारा शुरू करोगे कंस्ट्रक्शन तो आपको दोबारा से ईसी को अप्लाई करना पड़ेगा एनवायरनमेंट क्लियरेंस को। तो इससे होता क्या है कि जो है प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली अनवाइबल हो जाते हैं, कंपनीज बिड ही नहीं करती, इसीलिए जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमको इनको जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की जो है इन प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। तो आपको पता है ट्विटर जो है उनका बोर्ड जो है वो एक उनको ऑफ़र मिला है एलन मस्क जो है स्पेस एक्स वाले, कि वो कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं $43 बिलियन में। बट ऑफ कोर्स आपको पता है ट्विटर का बोर्ड जो है वो चाहता नहीं कि वो एलन मस्क को जो है अलाउ करें कि वो जो है वो कंपनी को टेक ओवर करें। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक कॉर्पोरेट टूल होता है पॉइजन पिल, उस पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का जो है वो इस्तेमाल करने का सोचा है। तो पॉइजन पिल में क्या होता है कि एक्चुअली जैसे आपको हम यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल है, ये एलन मस्क का एग्जांपल है कि 100 में से अगर 100% शेयर्स हैं तो उसमें से जो 9% शेयर्स हैं ट्विटर के वो इस टाइम पर एलन मस्क के पास हैं। तो अगर हमको बचना है, मतलब ट्विटर के बोर्ड को बचना है कि एलन मस्क पूरे के पूरे शेयर्स को जो है वो कैप्चर ना कर ले, तो क्या कर सकता है ट्विटर क्या कर सकता है कि जो बाकी के 81% आई एम सॉरी 91% लोग हैं, जो 91% शेयर होल्डर्स हैं, उनको और ज़्यादा शेयर्स दे दे। ठीक है, तो और ज़्यादा शेयर्स दे दे, मतलब समझ लो एक एक शेयर और दे दे उनको, तो 91% वालों को। तो कितने हो गए 91 और 91 182 है ना। तो 182 एग्जाम्पल से दे रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ। तो 182 शेयर हो जाएंगे जब टोटल, और उसमें सिर्फ जो है एलन मस्क के पास तो सिर्फ 9 ही रहेंगे। तो एक तरह से होगा क्या कि इन फैक्ट जो है वो 9% का जो शेयर जो एलन मस्क के पास पहले था वो कम होकर 4.5 या 5% रह जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एलन मस्क जो है वो उनको और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उनके लिए जो है वो एक तरह से अट्रैक्टिव नहीं रहेगा ट्विटर को बाय करना। तो एक तरह से क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर जिससे लग रहा है कि वो कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, उसके जो है स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए और ज़्यादा शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट पे, ताकि जो है बाकी शेयर होल्डर्स खरीद लें, और जो पर्सन जिसको आपने चाहते हो कि वो टेक ओवर ना करे उसको आप नहीं देते वो शेयर्स, और ताकि जो है उस पर्सन का, उस कंसर्न पर्सन का जो है शेयर जो है स्टेक जो है कंपनी में वो डाइल्यूट हो जाए। तो इसी को ही कहते हैं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, और कहा जा रहा है कि ट्विटर ये अपनाने वाला है टू डिसुएड एलन मस्क फ्रॉम बाइंग ट्विटर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन लोकल बॉडीज़। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो तैयार हैं 33% रिजर्वेशन विमेन को देने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ में। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी कराने को तैयार है। तो अब आपको पता है कि पहली बार ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन 2004 में हुए थे नागालैंड में, अंडर नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2001। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी लोकल बॉडीज़ की जो हमारी बनाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आर्टिकल 234 ये कहता है कि वीमेन को 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ में। लेकिन जब नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2001 में ये अमेंडमेंट की गई, 33% रिजर्वेशन वीमेन को दी गई इन लाइन विद 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके बिहाफ पर जो है इलेक्शंस जो है वो कॉल इन किए गए, तो वहाँ पर जो है नागा ग्रुप्स ने जो है बोला कि ये हमारे कस्टमरी लॉ के खिलाफ है, वहाँ पर विमेन को हम पार्टिसिपेट नहीं करने दे सकते, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमारे नागालैंड जो है उनका आर्टिकल 371 का जो ए आपका सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, तो हमारे नागालैंड में आप जो है वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो जब तक अगर वो नागा कस्टमरी लॉ को वायलेट कर रहा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फरवरी 2017 में जब इलेक्शन कराने की कोशिश की गई 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन के साथ, तो वहाँ पर लोग जो है भड़क गए, तो उसकी वजह से उस वायलेंट प्रोटेस्ट में वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ा। तो आपको देखो कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन नागालैंड कैसा है। आप वुमेन जो है वो पॉलिटिकल स्पेस में नागालैंड में बिल्कुल भी जो है वो दिखती नहीं है। कोई भी वुमेन जो है आज तक स्टेटस लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट नहीं हुई है। सिर्फ एक ही वुमेन है जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्ट हुई थी 1971 में, उसके बाद से कोई जो है वहाँ पर जीता नहीं है वुमेन, ठीक है। सेक्स रेशियो भी जो है नागालैंड की वो नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है, 931 पर है। और नागा कल्चर और जो कस्टम्स हैं वो विमेन को लैंड ओनरशिप से भी जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है विमेन को जो है इवन इनहेरिट भी नहीं करने देते हैं लैंड को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑयल बॉन्ड्स। तो जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कम नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 से लेकर 2010 में ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, उसकी जो है पेमेंट्स करनी है, उसके इंटरेस्ट भी पे करने हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि टैक्सेस को और फ्यूल टैक्सेस को कम किया जा सके। तो अब ऑयल बॉन्ड क्या होते हैं? ऑयल बॉन्ड होता है कि एक आई ओ यू क्या होता है? OWE पता है ना आपको? OWE मतलब ओ मतलब मैं आपको मैं आपका जो है आई इंडेप्टेड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो OWE वाला ओ, ठीक है, तो उसको आप IOU ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक ऑयल बॉन्ड एक IOU होता है या फिर एक प्रोमिसरी नोट होता है जो गवर्नमेंट इशू कर देती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कि हम जो आप फ्यूल के प्राइजेस मत बढ़ाओ, अभी आप मत बढ़ाओ प्राइजेस, जो आपके जो पैसा देना है अपने अपने जो आपका नुकसान हो रहा है उसके लिए हम आपको बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। समझ लो कि जैसे 1000 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो मतलब कि 1 साल तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कहा कि आपका समझ लो एक्सेस खर्चा जो हो रहा है 100 रुपये का आप ऑयल मत रखो, आप 80 रुपये का ऑयल रखो, जो 20 रुपये के हिसाब से अगर आपका 1000 करोड़ रुपए का साल का खर्चा हो रहा है तो हम आपको 1000 करोड़ रुपए के जो है 10 साल के बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, और उसके ऊपर हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट 1000 करोड़ तो देंगे ही 10 साल के बाद, लेकिन हर साल आपको 8% भी हम देते रहेंगे, ठीक है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो सोचती हैं कि यस ठीक है, हमारे लिए तो फ़ायदा है इसमें, हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है इसमें, और हमारी प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो भी पूरी आ जाएगी 10 साल बाद, तो उनके लिए तो इसमें फ़ायदा है। लेकिन गवर्नमेंट ये क्यों करती है, गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड्स क्यों इशू करती है? गवर्नमेंट उस टाइम पे अपफ्रंट जो है कंज्यूमर्स को जो है वो भार नहीं देना चाहती है ऑयल प्राइजेस का। तो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, मोस्टली वो पॉलिटिकल रीजंस ही होते हैं कि हम जो है इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं जो रूल कर रही होती हैं गवर्नमेंट में, तो वो नहीं चाहती कि प्राइजेस बढ़ें, तो वो ऑयल बॉन्ड्स इशू कर देती हैं कि जो है लोगों को ऊपर जो है ऑयल प्राइजेस का भार ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा ही साल 2005 से लेकर 2010 तक यूपीए गवर्नमेंट ने लगभग 1.4 लाख करोड़ के जो है वो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए। मतलब कितना ज़्यादा कर्जा लिया लोगों को सब्सिडाइज करने के लिए, जस्ट बिकॉज आपको पता है इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट्स इशू क्यों करती है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डिले कर रही हैं कि फिजिकल बर्डन को, मतलब कि वो खुद पे पैसे नहीं पे करना चाहती हैं, फ्यूचर की जो गवर्नमेंट्स होंगी उनके ऊपर वो खर्चा डाल देती हैं जो उस टाइम की गवर्नमेंट्स। और अगर उनको लगता है कि उनकी फिजिकल डेफिसिट जो है वो ब्रीच होने वाला है, वो टारगेट ब्रीच होने वाला है, तो वो अगली जनरेशन्स के ऊपर वो खर्चा डाल देती हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि उनको वो 1000 करोड़ रुपए जो उनको उसी 2005 या 2010 के बीच में देने थे वो नहीं दिए उन्होंने, वो 10 साल बाद जो है दूसरी गवर्नमेंट को आके देने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना खर्चा जो है वो अगली की गवर्नमेंट्स पे टाल दिया। बस उनको क्या खर्चा करना पड़ता है? सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब 1000 करोड़ करने की बजाय 80 करोड़ रुपए पे करते रहे, और जो है वो अब 10 साल बाद जो करंट गवर्नमेंट है उनको वो 1.4 लाख करोड़ जो है वो देने पड़ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
ई दर पोर्टल। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ जो है उन्होंने ई दर पोर्टल जो है वो उसको डेवलप किया है। और इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी रोड एक्सीडेंट जो होगा उसकी जितनी भी बेसिक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है उसको अपलोड कर दिया जाएगा इस ई दर पोर्टल के ऊपर, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो कंपनसेशन क्लेम्स जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोसेस करके विक्टिम फैमिलीज़ को रिलीफ दे सकें। ठीक है, तो जो है डिजिटलाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स जो है वो अपलोड की जाएंगी इस पोर्टल के ऊपर, और इसको इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के साथ जो है वो जो है लिंक कर दिया जाएगा। तो अब 90% ऑफ जो तो डेटा सेट्स हैं वो लगभग जो है वो ई दर के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो भी डेटा आपको एक एक्सीडेंट के बाद जो है वो गवर्नमेंट को कलेक्ट करना होता है या शेयर करना होता है वो इसी डेटाबेस के इसी पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो पुलिस से लेके रोड अथॉरिटीज़ तक, हॉस्पिटल्स तक जो भी जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो एक्सीडेंट के ऊपर, तो वो इसी ईदर पोर्टल के ऊपर उसको वो जो है वो एंटर कर दिया करेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो इंश्योरेंस की जो है वो कंपनसेशन मिल सके विक्टिम फैमिलीज़ को। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट ऑफ वीट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने बोला है कि इजिप्ट जो है वो एग्री कर गया है कि वो इंडिया से भी वो वीट को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो लगभग 6.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है वो 2021 में इजिप्ट ने इंपोर्ट किया, और 80% जो वीट इंपोर्ट्स थे इजिप्ट के वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन से थे। अब वो एग्री कर गए हैं कि यस हमको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे रशिया और यूक्रेन पर, और वो सिचुएशन वहाँ पर अब ठीक नहीं है। तो अब अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स येमेन, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और बाकी के कंट्रीज़ भी, अब इजिप्ट भी जो है वो हमारे एक्सपोर्ट बास्केट में, वीट के एक्सपोर्ट बास्केट में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, उन्होंने 500 मेगावाट के जो है दो जो है स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो है उसके लिए टेंडर इशू किया। मतलब 1000 मेगावाट्स की जो है आप ये समझ सकते हो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो लगाना चाहते हैं इंडिया में। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, और इसमें 1000 मेगावाट्स जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की बात की गई थी। तो अब इसको जो है राजस्थान में लगाया जा रहा है, फतेहगढ़ 3 ग्रिड सब स्टेशन के पास। और इसमें होगा क्या कि जो भी कंपनी इसको लगाएगी, ऑफकोर्स क्योंकि तो टेंडर इशू किया है ना सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, तो जो भी कंपनी जो भी प्रोजेक्ट इसको बनाएगी कंपनी, वो बिल्ड ऑन ऑपरेट बेसिस पर इसको जो है वो रन करेगी। और इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या है कि अभी क्या होता है, आपकी जो सोलर एनर्जी समझ लो या विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो वो वेस्ट जा रही है। ठीक है, उसको आप रोक तो सकते नहीं हो क्योंकि वो तो प्रोड्यूस होती रहेगी अगर सन निकला हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ताकि उसको आप रात को यूज़ कर सको, है ना, या फिर जब कभी समझ लो बादल हैं या फिर आपका क्लाउडी वेदर है तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए स्टोरेज सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ लो लार्ज बैटरीज हैं ये 1000 मेगावाट की, और इसको जो है स्टोर किया जाएगा जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसको जो है फिर बाद में यूटिलाइज़ करने के लिए जो है वो आपकी पावर डिस्कॉम कंपनीज यूज़ करेंगी इसमें से। ठीक है, तो इसको जो है वो ये प्रोजेक्ट की बेनिफिट्स हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीवीड पार्क। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सीवीड पार्क बनाना चाहती है तमिलनाडु के अंदर, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस मिलेगा उसको, और ये पार्क बनेगा अंडर पीएम किसान संपदा योजना। ठीक है, तो सीवीड क्या होते हैं तो आपको पता ही है, जो है आपकी एल्गी होती है ये। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर मरीन एल्गी होती है, इसको हम सीवीड कहते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है आपके हेल्थ के, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसको जो है वो जो है आपका इसका सीवीड का पार्क बनाने के लिए घोषणा की गई है। तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 5 साल के लिए इसको चलाया गया है, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर इसको अनाउंस किया गया था, और 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसमें इन्वेस्टमेंट्स होगी, जिसमें से 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ के आसपास का टाइम जो है जो रिसोर्सेज हैं वो बेनिफिशरीज जो आपके जैसे फिशरमैन होते हैं या जो इस मरीन इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए रखा गया है, और 77 सौ करोड़ के आसपास की जो
अमाउंट है वो फिशरीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इसमें रखी गई है, ठीक है। तो अब इसका एम ये है कि फ़िश प्रोडक्शन लगभग 70 लाख टन तक पहुंचानी है हमने इंडिया से 2024 से 25 के बीच में। फिशरीज़ का एक्सपोर्ट्स हमने लगभग 1 लाख करोड़ तक का करना है इस टाइम पीरियड में। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, फिशर्स एंड फिश फार्मर्स इनकम करनी है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20 से 25% तक कम करके हमको 10% तक लेके आना है, और 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है, ठीक है। इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जाएगी। क्लस्टर जो समझ लो कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर फिशरीज़ बहुत जो है वो प्रोलिफरेट होता है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसमें वहाँ पर उसी हिसाब से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो एक तरह से क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच जो है इसमें जो है वो विद बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक्वेजेस जो है वो अपनाई जा रही है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is environmental clearances. So Environment Ministry has extended the tenure of environment clearances for existing and even new projects. So what has been done by the government? So actually certain projects like the River Valley projects, they will now have a 13-year validity of EC, that is the environment clearance. Nuclear power projects will have the EC validity of almost 15 years, and other projects like which are other than the mining and river valley projects, they will have EC valid for 10 years. So what was happening is that there was a mismatch. Okay, so mining leases are given by the government for a period of 50 years, but the environment clearance is given by the government for same project just for 30 years. So there is a mismatch. Either you match it for 30 years or for 50 years of both. Okay, so it is very necessary to align the validity of mining ECs with the mining leases. Okay, so that's why the government has taken forward this decision, and government has also given this argument that there are certain projects like the nuclear power projects and hydropower projects which have a very high gestation period due to several reasons like geological surprises, delays in forest clearance, land acquisition, etc. So currently the environmental clearance rules are saying that the project must begin construction at the moment when the EC has been granted, but there are certain projects like this nuclear power projects and hydropower projects which cannot start their construction of the project immediately after getting the EC because of all these high gestation surprises. That's why this government has extended the validity of their EC so that the projects become financially viable. Okay, otherwise if you push them too hard to start the business or start the construction of their project at that very moment, it would dissuade dissuade private investors to invest in such projects. Okay, so that's why the government has extended the validity of environment clearance of such projects. Okay, so what is the next topic? It is poison pill strategy. So you know that recently Twitter, Elon Musk, that he's the founder of SpaceX. So he has made an offer to Twitter that he wants to buy the company for more than $43 billion, and the Twitter board is examining this offer. And because the Twitter board is not willing to sell the company to Elon Musk, that's why they want to save themselves, save the company Twitter by using a corporate tool known as poison pill. So what is happening is that, so let's learn from the example of Twitter itself. So currently Elon Musk is the largest shareholder, or as recently as now, I think he's the second largest shareholder now, but he's one of the of course largest shareholders, and he holds about 9% of the stake in Twitter. So let's say Twitter has 100 shares. Okay, so he's holding 9 shares of that. Okay, so Twitter board is feeling that he may increase his stake in the company and he may eventually take it over. So to prevent that takeover, what Twitter board is planning to do, this poison pill strategy, is basically diluting the stake of the largest shareholder from whom you are fearing that the person may take over the company. So what Twitter is planning to do is that Elon Musk has 9 shares. So how many other shareholders are there? 91. Okay, so what Twitter would do is, let's say Twitter starts giving 1 share each to those 91 shareholders at a discounted price, and let's assume that all of them buys this 1 share. So what would happen now is, the new shareholding pattern in the company would be 182 shares
and 9 shares by Elon Musk. So company would not give this discounted shares to Elon Musk, but it would provide 1 share each to other 91 shareholders. So thereby, what the company has done by this is they have diluted the stake of Elon Musk, and the company has basically increased its own value, and it has also made it very unattractive for Elon Musk to now take the company over. Okay, so this is what poison pill strategy means. It means that you dilute the value of of a stake of a shareholder by giving discounted shares to other stakeholders. Okay, so that's what Twitter board is planning to do to save Twitter from any acquisition bid by the or any acquisition attempt by Elon Musk. Okay. So the next topic is reservation of women in local bodies. So Nagaland government has informed the Supreme Court that it is ready to implement 33% reservation of women for women in urban local body polls. Okay, so it means that they are confirming that they are ready to hold the ULB elections. So actually, the civic body elections in the state were held for the first time in 2004 in accordance with Nagaland Municipal Act of 2001. So you know that our 74th constitutional amendment in the constitution, of course, says that 33% reservation for women must be there in urban local bodies as per the article 234T. So in 2006, that's why Nagaland Municipal Act of 2001 was amended to include this 33% reservation, okay, in line with the 1992 constitutional amendment. But the Naga people said that this reservation for women is in contravention with Naga customary laws, and any 1992 constitutional amendment cannot be enforced upon Naga people or Nagaland because they are enjoying a special status in the Constitution of India under Article 371A. Okay, like you know that earlier there was special status for Jammu and Kashmir. This Nagaland is already among many other states who are enjoying the special status in the constitution. Okay, so in February 2017, the government of Nagaland tried to hold elections as per the Supreme Court directive, but violent protests erupted and it led to the ouster of the then Chief Minister T.R. Zeliang. Okay, so now let us see the status of women in Nagaland. So women are not very prominent in the political space of Nagaland because you may see that there has been no women who has been ever elected to the state legislative assembly. Only one woman, Rano M. Shaiza, was able to win the Lok Sabha constituency in the state in 1971. So even the sex ratio in Nagaland is below the national average, and the Naga customary law debars women from even land ownership and even inheriting land is prohibited for women. Okay. So the next topic is oil bonds. So because the prices of petroleum is rising or the crude oil prices are rising, that's why Union Finance Minister has claimed that the current government cannot bring down taxes because it has to pay for the oil bonds which were issued by the UPA government during the period of 2005 to 2010. So what is an oil bond? So oil bond is basically a promissory note that the government issues to the oil marketing companies because let's say that oil prices today start rising to the level of let's say 200 rupees. Okay, so what the government cannot subsidize the people. Government cannot say na that let's to oil companies that you charge just 100 rupees from people, then the other 100 rupees we will pay you. Okay, so the government cannot just pay this much amount to oil marketing companies at the upfront. So what the government can rather do, it can issue oil bonds to these oil marketing companies saying that you just charge 100 rupees from the consumers today, and that 100 rupees that we are going to subsidize, you just cut up that amount from, you sell the petroleum products at 100 rupees. Your 100 rupees that we have to give you now, we will give you after 10 years, and
After that, after 10 years, you will get the entire amount, and during this 10 years you will also get 8% interest on that, on these bonds. Okay, so oil marketing companies would be willing to do it because they are getting interest also, and they are, their principal amount is also secured, and they will get this money after 10 years also. So that is what the UPA government did between 2005 and 2010. So because there was a an uproar in the public, and this was a time of 2009 elections. So the UPA government did not want oil prices to become an issue in the elections. That's why it issued oil bonds worth 1.4 lakh crore rupees to these oil marketing companies to compensate consumers for these, to compensate the companies for the losses that these oil marketing companies have been incurring by selling oil at subsidized prices. Okay, so why did the government issue such? Why do the governments issue such oil bonds? So actually, the let's say this example of UPA government, the UPA government was trying to delay the fiscal burden, and it was trying uh, to postpone the expenditure to a future government. Okay, UPA government was UPA government basically delayed the fiscal burden to the future government, like the current NTA government. So they did not want at that time to subsidize the consumers from their own pocket, from their own financial resources, because it would have meant that the fiscal deficit target would have been breached. So they just they postponed this expenditure to a future government. And of course that's why it is not a good thing to do, because if you keep on doing this, then the credibility of the government as a fiscal manager decreases, because you are just taking loans to repay your loans. Okay, so that's not a good thing. And then these credit rating agencies start downgrading your ratings also. Okay, so that's why it is not a good practice to issue oil bonds. Okay, so now let us see the next topic, which is either portal. So government of India, under Ministry of Roads, Transport and Highways, has developed this either portal, and this portal will basically provide instant information on road accidents, and all the requisite information, about 90% of the data collected by various stakeholders like police, road authorities, hospitals, etc., would be uploaded on this portal, so that the insurance companies can accelerate the accident compensation claims, and the victim families can take the relief in a fast manner. Okay, that's why this either portal has been launched, and it will also be linked to the integrated road accident database. So the next topic is export of wheat. So Union Minister of Commerce and Industry has confirmed that Egypt has agreed to source wheat from India. So currently about let's say this figure is about from 2021. So Egypt imported about 6.1 million tons of wheat, and 80% of this wheat was imported from just Russia and Ukraine. So now it has agreed to import from India also. Egypt is not the only country who is which is sourcing wheat from India after this Russia-Ukraine crisis. There are other countries also, like Bangladesh, UAE, Qatar, Sri Lanka, Oman, Malaysia, even Yemen, Afghanistan, and Indonesia are taking wheat from or buying wheat from India. Okay. So the next topic is battery energy storage system. So Solar Energy Corporation of India Limited, which is a CPSU under the Ministry of New and Renewable Energy, it has issued the tender for setting up 1,000 megawatts of standalone battery energy storage system in India. So it is actually in October 2021 when this Ministry of New and Renewable Energy and Ministry of Power decided that they will set up this battery energy storage systems in the country, and now they have decided to establish it in Rajasthan, that is in Fatehgarh 3 grid substation. And this any private
investor who will be setting up these projects, they will operate it on the build own operate basis. And this will be basically large batteries. You know that if you are producing solar power, if you're either you are consuming it, or if you're not consuming it, then you are wasting it, okay, because it is not going to stop, it is going to produce continuously. So it is better to have a large batteries which you can through which you can store these energy production. So that's why this battery energy storage system comes into picture. Discoms would be able to utilize the stored electricity from these battery energy storage systems, and let's say this electricity can be used to manage load, strengthen the grid stability, and even use this for frequency control and balancing services. So let's say during the night, if there is if the demand for electricity rises, then using these batteries also, the discoms can supply the electricity to the consumers. Okay. So the next topic is seaweed park. So Minister of State for Fishing has said that the central government would establish a seaweed park with special economic zone status in Tamil Nadu, and it will come up under the PM Kisan Sampada Yojana. So you know that seaweed is a macro algae. It has immense health benefits, and that's why it is sold by the marine industry. So this project is going to be established under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which is a flagship scheme of the government of India. It was announced during the Atmanirbhar Bharat package. So it will function during a period of 5 years. It has a project cost of about 20,000 crores, out of which 12,340 crores is proposed for beneficiary oriented schemes like fishermen, etc. So they will be getting the benefits, and 7,700 crore of resources will be used for fisheries infrastructure. Okay. So the objective of this scheme is to enhance fish production by an additional 70 lakh ton by 2024-25, even increasing fisheries export to the tune of 1 lakh crore by 2024-25 is one of the aim of this scheme. Doubling of incomes, reduction of post-harvest losses, and even creation of 55 lakh direct and indirect gainful employment opportunities are the major objectives of this scheme. Okay. So the scheme is adopting a cluster or area-based approaches. You know that cluster approach. Let's say there is a district near a coastal state where a particular form of fishing is very famous. So that's why that the particular kind of infrastructure would be developed in that area, so that cluster-based approach or area-based approach can be taken, and the infrastructure or backward and forward linkages with that area can be established using this particular scheme. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.